उसमें अब आप ये I read that out. No inquiry required. हाँ जी. A judge of a high court shall not be removed from his office except by an order of the president made on the grounds of misbehavior or infirmity of mind or body. If the Supreme Court, उस पर Supreme Judicial Council नहीं, Supreme Court ये function करते. If the Supreme Court, on reference being made to it by the president, reports that the judge ought to be removed on any of those grounds. ये Article 169 था उसमें. और इसके बावजूद भी डिटेल इंक्वायरी की गई थी उसमें और डिटेल इंक्वायरी ये अखलाक हुसैन का केस था तो 56 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अंडर कंसिडरेशन और द 60 कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, मगर उसके बावजूद भी इंक्वायरी हुई थी. सो मेरी गुजारिश ये है कि दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ इट्स नेचर वेयर ए जज इज रिमूव्ड विदाउट इंक्वायरी. It will have a repercussion for the future because judges of the Supreme Court has no other security available to him except that a Supreme Judicial Council makes inquiry into the allegations. If that is taken away from him, then he is left on the mercy of the person who alleges against him, whether he is president or whether he is any other person making a complaint. So therefore my submission is that a detailed judgment is required to give why inquiry is so necessary in cases where the allegations against the judge of the superior courts for which there cannot be any recommendation for removal without without holding a proper inquiry into it and giving a statement of allegations. Even in the case of Akhlaq Hussain, there were 3 allegations, specific allegations made. Similarly, in case of Sheikh Shaukat Ali in 1971, specific allegations were made against him, on which inquiry was held. In here, no statement of allegations were ever given to the petitioner, and naturally. एक और भी केस था ना वो खान साहब वाला. जी. एक और भी केस था ना, वो रिपोर्टेड है या नहीं है? ये दोनों केसेस तो फजले गनी खान साहब का कोई उसमें केस चला था या नहीं चला? चला नहीं था. इनका नहीं चला था. नहीं चला. खान साहब एक बात बताएं आप, इसके अंदर तो एलिगेशन डिफरेंट है शौकत अली साहब वाले में और अखलाक हुसैन साहब वाले में. यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन की बात है, सब सेक्शन 5 ऑफ आर्टिकल 209, वो इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है. तो यहाँ तो कॉग्निजेंस लिया है इसने. वहां पे इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक पर्सन ने, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है. तो इंक्वायरी उस सूरत में करी जाए जब कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने, खुद लिया, रजिस्ट्रार ने दूसरा लेटर भेजा है, बिल्कुल उसकी बेसिस पे. तो ये चीज जो है यहाँ पे जरूरी है, इंक्वायरी बहुत जरूरी. जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट खुद ले रहा है और भी ज्यादा जरूरी हो गई है. जनाब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और भी ज्यादा जरूरी हो गई है. हुआ ये था कि ना 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में ये केसेस में (62) के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो सकता था. 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं हो सकता. फॉर द फर्स्ट टाइम 17th अमेंडमेंट में ये लाए गए थे. द काउंसिल ऑन इट्स ओन, द काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन, ये पहली दफा 2005 में इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल हैव द पावर ऑन इट्स ओन, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट अवेलेबल, कैन प्रोसीड against a judge of the. This is the case here. It is not a case of presidential reference. It is a case with Supreme Judicial Council. कैसे शुरू हुआ ये जरा में दिखाइए. लेटर रजिस्ट्रार सर, दोबारा ये बताएं कैसे. क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या अपने तौर पे ये उठाया या वो किधर या रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा? रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में लिखा? ये अपने तौर पे ना कंप्लेंट है, ये वो दिखाएं. रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में दी ये भी देखना है. दिखाएं क्या चीज है उसको. 39 पेज के ऊपर है ये. 39 पेज पे पैरा 3. 2018 को रजिस्ट्रार ने ये पेज नंबर 39 ऑफ द पेपर बुक. जी सर, ये है.
सर यहाँ पर Upon perusal of the note put up by the Secretary of the Council, ये नोट किधर है, किस पेज पे? नोट नीचे है सर दिया वो पैरा 3 में। किधर है? आपके कॉपी लगाई आपने एक्चुअल? लगी हुई है जी सर, जी copy कॉपी भी लगाई, इन्होंने खुद भी जो जवाब दिया है रजिस्ट्रार ने। मुझे वो दिखा देना, एक्चुअल नोट कहाँ है? जी सर ये 21/7/2018 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्दीकी एड्रेस। नहीं पेज कहाँ है, पेज कौन ये सा है? पेज 39 पे सर नहीं नहीं, ये तो उसका रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन है। मुझ में एक्चुअल नोट दिखाइए मुझे। एक्चुअल नोट्स हमारे पास तो नहीं है, ये हमें तो ये रिपोर्ट से डॉक्यूमेंट फाइल किए, इसमें क्या है सारे ये जितने? अब उन्होंने जो ये सर जवाब दिया 73 पेज पे एक लेटर है अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब का। जी कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अभी जवाब। ये 31 जुलाई 2018 का है। जी हाँ नहीं, आई एम डायरेक्टेड टू सर्व अपॉन यू द एनक्लोज्ड। ये तो बाद में है ना, कंप्लेंट जो इन्होंने रिसीव की है वो 23/7 की है, जो रजिस्ट्रार ने जी, वो कंप्लेंट मेंशन किया, उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ है पेज नंबर 39 पे पैरा 3 में रिप्रोड्यूस किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वो रिप्रोड्यूस किया। The note put up by the registrar and the transcript of the speech. Note जो है कौन है note? हाँ ये note on top of page 39 on 21/7/2008 Honorable Mr. Justice Siddiqui addressed District Bar Association Rawalpindi. During this speech he stated एक सेकंड, 39 के शुरू में सर, page 39 सर, ये पैरा 238 से शुरू हो रहा है। page 39 के ऊपर जो फर्स्ट पैरा जनाब देखिए। नहीं वो तो एलिगेशन है ना। जी एलिगेशन है। अच्छा नीचे पैराग्राफ 2 से पढ़िए। सर ये पैरा 2 on page 38 जी। on 23/7/2018 the secretary of this council registrar Supreme Court of Pakistan submitted the following note before the chairman of the council chief justice of Pakistan। ये वो फिर नोट 23/7 को ये रखा गया। On 21/7/2018 Honorable Mr. Justice Siddiqui No, he was acting pursuant to a direction of the Supreme Judicial Council, or my lord has asked, Justice Jamal has asked that he did it himself. एक तो ना you do it. One is he does it, comes before the Supreme Judicial Council. So it doesn't say so much, but it appears that there was some kind of a, We will go by the constitution. Constitution says the council on its own. on its own. Secretary is not the council. नहीं तो He may be complainant. It may be. He's part of the, But he's part of the Supreme Judicial maybe Council. the council had directed him to do it. I don't know. Nothing is on record, कोई चीज नहीं है। ठीक। लेकिन ये इसका मतलब है उसने अपनी कैपेसिटी, उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी में दिया। आप ये हियरिंग जो, अच्छा एक चीज बताइए, ये आप जनाब पढ़ लीजिएगा। कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये केस लगा आपका? आप कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आप लोगों को तलब किया? एक दफा, only on one occasion. What happened on that occasion? On that occasion, we said that please, in the first place, No, you asked something. Why were you called? we were called to explain as a preliminary hearing before inquiry and preliminary hearing hoti under the Were you 2000. was the petitioner alone or was he assisted? I was with him. क्या as हुआ था? जरा counsel. बताएं क्या हुआ था उस दिन? उसमें यही क्वेश्चन हुआ कि ये क्या स्पीच की है आपने? Okay, we made a speech which we नहीं वो ठीक है बस. So it was a casual, formal meeting. What वो charge frame हुआ आपके खिलाफ क्या कोई हुआ? चार्ज फ्रेम नहीं है, कोई चार्ज फ्रेम नहीं है, बल्कि इससे पहले No, we may need to see the record of the Supreme Judicial Council. जरूर देख लीजिएगा। कोई कहाँ यहाँ भी कहीं रिपोर्ट में भी नहीं कहा गया कि कोई चार्ज फ्रेम हुआ है। रिपोर्ट में देख लीजिएगा ना, कहीं पर ये नहीं कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी गई जिसका मैंने जवाब देना था। नथिंग ऑफ दैट सर। आपको कोई शो कॉज नोटिस नहीं हुआ इशू हुआ? शो कॉज नोटिस दिया वो गया। किधर है? वो शो कॉज नोटिस Page 74 पे, 74 of the petition. ये जनाब पेज 42 पर रिप्रोड्यूस भी हुआ है जज। पेज 74 पर है। इसका ये तो वेर इज अच्छा नाउ यू आर
ये पेज 75 पे आ जाइए ना, ये है ना ये है जी पेज 75 पर. Now your lordship are hereby called upon to explain your conduct with regard to the following allegations which prima facie constitute misconduct on your part within the meaning of paragraph B of clause 5 and clause 6 of article 209 of the Constitution. You were, while addressing the District Bar Association Rawalpindi on 21/7/2018, have leveled the following serious allegations pertaining to superior judiciary and a state institution. No, There are- तो देखिए इधर the question of seeking publicity नहीं allegation है. ये नहीं है. ये तो allegation वही है ना, substance पे जा रहे हैं straight away. It's not. अच्छा. Making a speech and on the content of the speech actually अच्छा जो भी- पढ़ें बाकी पढ़ें. that ISI is fully involved in manipulation of judicial proceedings, including marking of cases to honorable benches. 2. That ISI personnel approached Chief Justice Islamabad High Court and asked him not to let Mr. Nawaz Sharif and his daughter come out of prison before general elections 2018 and not to include your lordship in the bench. And that Chief Justice Islamabad High Court responded that the bench will be constituted as per their desire. That your lordship claimed to even have knowledge of the person who conveys messages to the Supreme Court, that daily proceedings of accountability court were being reported somewhere, and that your lordship also knows the reason why the administrative control of Islamabad High Court as per statute was removed so that no judge could look into the proceedings, that your lordship was asked to give assurance that your lordship would give decision as per their request, and then references pending against your lordship would be closed. That if your lordship decided cases according to their desire, your lordship would be made Chief Justice Islamabad High Court by September 2018. Upon presentation of the transcript of your speech, Honorable Chief Justice of Pakistan had been pleased to observe that the allegations leveled in the speech had cast aspersion and maligned the superior judiciary of the country and berated its independence. It also implies some other national institutions. And the Honorable Chief Justice of Islamabad High Court was asked to comment upon the veracity of the allegations leveled against him. He was also asked to obtain from your lordship the material evidence available, if any, to be immediately transmitted to the office of the Chief Justice of Pakistan for consideration and appropriate action if necessary. In response, Honorable Chief Justice Islamabad High Court offered his comments by letter dated 29/7/2018, wherein his lordship responded that while a letter dated 24/7/2018 received from your lordship regarding allegations leveled against Honorable Chief Justice of Islamabad, his lordship has categorically denied all the allegations. The above act on your part amounts to misconduct as envisaged in the provisions inter alia of Article 2, 3, 5 and 9 of the Code of Conduct prescribed by the Supreme Judicial Council. One fact I want to bring to the notice, sir. At the time when these proceedings were initiated, proceedings were going on against Justice Anwar Qazi, Chief Justice of Islamabad High Court, before the Supreme Judicial Council for quite some time. I remember in another case when he sat on the Supreme Judicial Council and I objected. That was a case where I was counsel for Justice Farooq Irfan. I objected to his sitting on the Supreme Judicial Council on the ground that under clause 3 of Article 209, a judge against whom proceedings under the Supreme Judicial Council were being Was it the same matter or some other matter? That was a question. They declined that. I don't understand your contention. Are you saying, suppose... I'm disclosing, I'm stating facts. No, एक second. In fact, you may be stating, but you are making a legal implication out of the stated facts. Now, for instance, suppose the Supreme Judicial Council is legitimately convened to inquire about a judge. It may be used as a tactical ploy to file complaints against all the members of the Supreme Judicial Council and then say, oh, none of you can hear the matter.
So merely that in itself is nothing relevant unless there's a direct nexus. You know, otherwise तो इधर बड़ा खूबसूरत होगा. इनके भी खिलाफ कर दो वो फेल ही हो गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. मैंने ज़िमनन बताई कि उस वक्त ये ऑब्जेक्शन इसलिए लिया गया था कि जस्टिस अनवर काजी वाज अंडर इंक्वायरी इन अनदर केस अगेंस्ट हिम. देखिए खान साहब, आप उसकी आप रिकॉर्ड मंगा लें. खान साहब सॉरी, या तो आप इसको कोई दलाइल देना कानूनी आईनी, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है भाई. हमें नहीं पता कल कोई 50 कंप्लेंट फाइल कर दे सब जजेस के खिलाफ तो सुप्रीम इदारा ही खत्म हो जाएगा. नहीं, वो इंक्वायरी वहां होती है जहां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सेज दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी केस for proceeding against him. There was a case which was going on, inquiry was going on. How would that matter to him, No. to the petitioner? How it Maybe he gets removed, both get exonerated. मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिएगा फिर उसके बाद. हाँ, बताइए हुआ ना. क्या, ये जो फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं कि उनको खत लिखा गया था कि बताएं ये एलिगेशंस हैं, उन्होंने डिनाई किया. What happened? मुझे 11 अक्टूबर को रिमूव किया गया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. उसी दिन या उससे अगले दिन उनको एग्जोनरेट कर दिया गया फ्रॉम द चार्जेस ही वाज फेसिंग बिफोर. तो आप सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं. दैट द वेरी नेक्स्ट डे ये फैक्ट्स जनाब आप I'm saying for the sake of arguments, if these facts are correct, what does it mean? It means, sir, that वो चूंकि गवाह बन गए हमारे खिलाफ तो उसको उसकी जो एलिगेशन से उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया. नहीं, क्या वही कंप्लेनेंट दोनों केस में था या तो कुछ ऐसा नेक्सस जोड़िए ना. ये बातें और है, मैं सिर्फ जनाब को बता रहा हूँ देखिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किया क्या. जब उन्होंने मेरी एलिगेशन को डिनाई किया तो उनको छोड़ दिया. जहाँ तक आपकी बात सब देखिए, हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे ऐसे उंगलियां नहीं उठाएंगे. जहाँ तक आपने बात की ना इंक्वायरी की, वो तो हमें समझ आ गई ना. आपने एक आईनी बात कर दी, वो समझ आ गई. अब ये हो सकता है नहीं हो सकता, अभी हमें इस मफरूजों में क्यों जाएंगे. नहीं, लेट्स स्टे आइन पे बात करें, क्योंकि अब आप 184(3) में आ रहे हैं. देखिए इसमें 184 का दरवाजा खुलता है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है. हर जज की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इज रिमूवल आई थिंक इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसलिए उसका दरवाजा खुल जाता है. आ गई बात इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपने बात कर दी ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, बिल्कुल ये भी समझ आ गई. मगर अब ये जो बाकी चीजें ये इसमें कुछ समझ नहीं आ रही बात. इसलिए कि जो हो सकता है सही भी हो तो सो व्हाट. आपका खदशा ये पोर्शन मैंने पढ़ के आपने कहा तो मैंने पोर्शन पढ़ा. अच्छा, इसको छोड़े, कोई और बात करें. चलिए, तो मैं नहीं, कोई और बात करें तो बताएं. मेरी तो गुजारिश सिंपल ये है कि दिस इज अ केस वेयर ए जज हैज बीन रिमूव्ड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस. We got the point. And we are just saying how to go forward. That's all. This order has to go. This report has to go. Has to be quashed. So that in the future, But what about the public interest in the matter? They need to know. Or they are not entitled to know. उसके लिए मैंने ऑलरेडी सबमिशन की है कि ये ऑर्डर सेटिसाइड होके इसको जनाब रिमांड कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर. दैट इज द आंसर टू माय माइंड. इफ यू लॉर्डशिप थिंक्स अगर आप नहीं, ठीक है, इफ यू कंक्लूडेड, वी डोंट वांट टू कट यू शॉर्ट. Can we move on to Salah? I just saw that he's in Karachi. जी ठीक है सर, मेरी सबमिशन ये है कि रिमूव विदाउट इंक्वायरी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑट टू बी स्क्वैश्ड. हामिद साहब, आप इस एस्पेक्ट को तो डिनाई नहीं करेंगे कि जस्टिस सिद्दीकी साहब को एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई थी, क्योंकि प्रोसीडिंग्स 2 महीने से ज्यादा चली हैं और कम से कम 2 से 3 रिप्लाईज इन्होंने जमा कराई हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हामिद साहब आपसे पूछ रहा हूँ. जी सर, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि आप इस एस्पेक्ट को तो डिनाई नहीं करेंगे कि जस्टिस सिद्दीकी साहब को एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई है, 2 महीने से ज्यादा प्रोसीडिंग्स चली हैं और इन्होंने कम से कम 3 से 4 रिप्लाईज अपनी जमा कराई हैं. लिहाजा ये एस्पेक्ट कहना कि जी इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली ही नहीं या इनको टाइम नहीं दिया गया, तो ये तो किसी हद तक के दुरुस्त मालूम नहीं होता रिकॉर्ड से. देखिए ना, प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं 23/8 23/7 को और कंक्लूड हुई हैं